Hello everyone, this is Ritik from AcetheCLAT. I'm sorry for the delay, but yeah, here is the video on the ambiguous questions that came up in CLAT 2020. Okay, at least the apparently ambiguous questions. I will look into each of them, right? I have selected around 10-12 questions. I will go through each of them and try to determine if they are really ambiguous or not. Okay, here is the first PDF. This PDF was downloaded from the consortium's website itself, right? This is the question paper, and here is the modifications that were notified, modifications in the questions and answer key that were notified by consortium of CLAT on October 3, 2020. CLAT, for your information, was conducted on 28th September, right? Yeah, 27th or 28th September. So modifications in the questions, these three questions were dropped from the UG program. We are concerned with the UG program only. And there were some modifications in the answer key as well. So for question number 8, 35, 148 and 149. Okay, let's start with English section first. Okay, I will look at question number 6, 8, 5 and 14. Okay, let's start with question number 5. Here is the question: what is the meaning of the word resilience occurring in the passage? So simple Google search will tell you resilience. Yeah, a Google search will tell you that it means flexibility. At the same time, it means toughness as well. Okay, both are present in the options. What the question is what is the meaning of the word resilience occurring in the passage? It occurred over here. Communities must build their resilience, and for that matter, if we look at the previous sentence, because of the speed, this passage was based on climate change. Okay, so इस sentence को देखिए, because of the speed at which climate change is happening, it is urgent that the vulnerability of developing countries is reduced and their capacity to adapt is increased. Okay, and national adaptation plans are implemented. Communities must build their resilience, including adopting appropriate technologies while making most of traditional knowledge and diversifying their livelihoods to cope with current and future climate stress. Okay, देखो रेजिलियंस का मतलब कॉन्टेक्स्ट में भी ए और सी दोनों होना चाहिए. ए मतलब टफनेस भी. कम्युनिटीज़ मस्ट बिल्ड देयर रेजिलियंस, राइट. रेजिलियंस यहाँ पे टफनेस को भी इट इंडिकेट्स दैट एज वेल, लेकिन एट द सेम टाइम फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखा रहा है. Okay, communities must build their resilience. The second point is valid because it says including adopting appropriate technologies and making the most of traditional knowledge. तो ट्रेडिशनल नॉलेज भी और अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज दोनों को अप्लाई करना है अपने को. यहाँ पे एक्चुअली दोनों ऑप्शन, टफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, आप दोनों को एलिमिनेट नहीं कर सकते. बोथ ऑफ देम सेटिस्फाई द क्राइटेरिया, द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेजिलियंस occurring in the passage. Contextually दोनों करेक्ट हैं. The correct answer should be option A and C. Okay, I do not know why option C is marked and it wasn't changed later as well. Okay, यहाँ पे देख लो question number 6. What is the central idea being conveyed by the author in the passage above? If I look at this passage, it has been taken from an editorial that was published in the Times of India. If I go to that editorial, search the web for this. Here is the editorial. Locker room horror, social media toxicity is encouraging minors to adopt misogynistic, abusive avatars. Right, this was the editorial and यही editorial question setters ने question में examination में पूछा था. Question is, what is the central idea being conveyed by the author in the passage above? Now, if you look at the central idea from the perspective of the author, it says that social media की जो toxicity है, that is encouraging minors to adopt misogynistic, abusive avatars. Right, and for that matter, we shouldn't expect a similar option to be the correct answer over here. Right, option यहाँ पे correct A है. Modern social networking platforms must take the lead in regulating young people from using these platforms for sexual abuse. See, अगर आप पैसेज पढ़ोगे तो मॉडर्न सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स को ऑथर ने ये ज़रूर बोला है कि इट शुड कंट्रीब्यूट इन टेकिंग द लीड इन रेगुलेटिंग यंग पीपल फ्रॉम यूजिंग दीज प्लेटफॉर्म्स फॉर सेक्शुअल अब्यूज़, बट यहाँ पे मस्ट नहीं बोला है. ओके, सो अगर क्वेश्चन ये होता कि व्हाट विच अमंग द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, ओके, और ऑप्शन ये है कि मॉडर्न सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स मस्ट टेक द लीड, ऑप्शन ये गलत होता था. ओके, और सेंट्रल आइडिया में भी यही कंसर्न है. तो वो ऑप्शन जो कि 100% ट्रू ही नहीं है पैसेज के बेसिस पे, वो उस ऑप्शन को हम सेंट्रल आइडिया कैसे मान लें. ओके, सेंट्रल आइडिया एज आई सेड शुड बी ऑन द लाइन्स ऑफ दिस सेंटेंस. सोशल मीडिया टॉक्सिसिटी इज encouraging माइनर्स टू अडॉप्ट मिसोजिनिस्टिक अब्यूसिव अवतार्स. आई एम नॉट सेइंग कि दिस मस्ट बी द करेक्ट आंसर. ओके, लेकिन कुछ ऐसा सिमिलर, यू गेट द पॉइंट, राइट, कि कुछ ऐसा सिमिलर क्वेश्चन होता, ऑप्शन होता, तो वो बेटर ऑप्शन रहता था. ओके, फॉर दैट मैटर यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए था. Okay, this was a significant issue, तो keep this in mind. Question 8 अगर देखा जाए, according to the author, in order to understand the root cause of such insensitive incidents, it is important to. So correct option
ए है, यहाँ पे डी मेंशन है, बट वी नीड टू कीप इन माइंड कि जो लेटर उन्होंने बाद में उन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला था मॉडिफिकेशन के रिलेटेड, इन दैट दे मेंशन कि या द करेक्ट आंसर शुड बी ए. ओके, सो क्वेश्चन क्या है अकॉर्डिंग टू द ऑथर, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज, सो रीज़न अंडरस्टैंड करने के लिए, रीज़न समझने के लिए व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, द ऑथर ओवर हियर सेज दैट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज वेयर दिस इंसिडेंट इज़ कमिंग फ्रॉम. एंड बाद में उन्होंने ये बोला कि पीपल आर रिट्रीटिंग डीपर इनटू द रिसेसेस ऑफ देयर ऑनलाइन अवतार्स ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, when what they see, read and hear is toxic masculinity, that is what they perform. So in other words, the author is saying ki the kind of socialization process these children or these minors are exposed to, we need to understand that in order to understand the root cause of such insensitive incidents. Adopting artificial intelligence driven technologies, strengthening the environment of discipline in schools and colleges, this has not been discussed in the passage. So option B and C eliminate हो जाते हैं, D ऐसे ही eliminate हो जाता है क्योंकि all of the above नहीं है, option A correct है. Okay. The next question is from the next passage number 3, and the question number is 14. Okay, the author's description. The question reads that the author's description of this thing implies that cats absolute freedom from everything, cats no association with human beings. Well, यहाँ पे cats disassociation with human beings लिखते तो बेहतर रहता. Okay, grammatical mistake तो definitely यहाँ पे. Cats loneliness, cats tyrannical demeanor. Okay, let's look at that sentence. Okay, उसके पहले का एक सेंटेंस पढ़ते हैं एंड हाँ उसके पहले का एक सेंटेंस पढ़ते हैं और उसके बाद के कुछ सेंटेंसेस भी पढ़ते हैं. ओके, सो दिस पैसेज इज़ अबाउट अ कैट हु इज़ लुकिंग टू हंट ड्यूरिंग स्नोफॉल. ओके, इट वॉज नाइट बट दैट मेड नो डिफरेंस. ऑल टाइम्स वेर एज वन टू द कैट व्हेन ही वॉज इन वेट फॉर अ प्रे, सो प्रे के लिए वेट कर रहा था. देन टू, ही वॉज अंडर नो कंस्ट्रेंट ऑफ ह्यूमन विल फॉर ही वॉज लिविंग अलोन दैट विंटर. ओके, यहाँ पे लिविंग अलोन लिखा है, फॉर ही वॉज लिविंग अलोन दैट विंटर. पहले यहाँ से ऊपर से देखते हुए, अपारेंटली देखते हुए तो ऐसा लगता है कि ऑप्शन सी ही करेक्ट होना चाहिए बिकॉज कैट्स लोनलीनेस की बात करिए. बट देन टू, नो वेयर इन द वर्ल्ड वॉज एनी वॉइस कॉलिंग हिम. ऑन नो हर्ट वॉज देयर अ वेटिंग डिश. तो हर्ट मतलब है फायर प्लेस, राइट. ही वॉज क्वाइट फ्री एक्सेप्ट फॉर हिज ओन डिज़ायर्स विच टायरनाइज्ड ओवर हिम व्हेन अनसेटिस्फाइड एज नाउ. व्हेन वी कॉल समथिंग एज फ्री, ओके, तो वहाँ पे ना लोनलीनेस की बात हट जाती है. ओके, बहुत लोगों का मानना ये है इस वजह से कि बेटर ऑप्शन वाज ऑप्शन बी. ओके, ही वाज नो अंडर नो कंस्ट्रेंट ऑफ ह्यूमन विल, वो ह्यूमन बीइंग से अटैच नहीं था. एंड जो फर्स्ट सेंटेंस भी है उस सेंटेंस के बाद, राइट, नो वेयर इन द वर्ल्ड वॉज एनी वॉइस कॉलिंग हिम, तो इंसानों को वॉइस बुलाती है, राइट. एंड ऑन नो हर्ट वॉज देयर अ वेटिंग डिश. इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, राइट, कि ह्यूमन्स के लिए ही डिश वेट्स, मतलब जो खाना जो है परोस के रख दिया जाता है. He was quite free except for his own desires. Again, when we say कि he was free except for his own desires, यहाँ पे भी desires कोई नेगेटिव वर्ड नहीं इस्तेमाल किया गया, इसलिए loneliness शायद उतना बेहतर ऑप्शन नहीं है. अगर बेहतर ऑप्शन होता भी तो भी we need an explanation regarding this. Okay, बिना एक्सप्लेनेशन के तो कम से कम ऑप्शन बी ही बेहतर या फिर बेटर लगता है. So these were the questions that were apparently ambiguous for the English section. Thank you. If you found this video useful, please give a thumbs up and subscribe if you haven't already. Bye.